Hello student, good afternoon one and all. Welcome back to physics class. Today lecture number 6, chapter number 7, thermal properties of matter. Okay, so today we are going to start a new topic, that is topic 7.6 from the textbook, and it is specific heat capacity. Okay, already you might have studied in class 10 or class 9 specific heat capacity. Before going to define this term, let's have one example, daily life example. Okay, suppose if I take two different liquids like water and paraffin which is used in medicine. Okay, suppose if I have two beakers, and in these two vessel, in one beaker I took 1 kg. Here we are going to talk about mass of liquid. So 1 kg of water, and in another beaker if I take 1 kg of paraffin, 1 kg of paraffin, correct? Initially both are at same temperature, that is room temperature. If I take room temperature, say that room temperature is 25 degrees Celsius, normal room temperature. This liquid is also at 25 degrees Celsius, and both the liquids heated by same burner with the same flame, or take a heater भी ले सकते आप. You can immerse the heater in both the liquids, right? तो और heater के जगह पे burner भी ले सकते हैं आप, right? But you must know how much amount of heat to be supplied, right? Here also we have taken the same burner with same heat supplied. Okay, so suppose by supplying same amount of heat, same amount of heat, okay, say if I take 100 joule of heat supplied to both, right, and for same time, for same time interval, say it is 5 minutes for both. So we have taken these two different liquids of same mass, 1 kg, for supplying same amount of heat for the same time, and just immerse the thermometer here. इसमें भी thermometer डाल दो, यहाँ पे भी thermometer डालो, and take a reading of thermometer, right? So suppose here if you are observing something 20 degrees Celsius, sorry, it is 25 initial temperature. Suppose you are observing 50 degrees Celsius, right? How much rise in temperature? That is 25, and here you will observe the temperature will be 75 degrees Celsius, right? Means for the same mass, same time, same amount of heat, we observe that two different liquids shows the different rise in temperature. So what this indicate that? This indicate that if you want to increase the temperature of a liquid, temperature of a substance by 1 degree Celsius for unit mass, it may be 1 gram or 1 kg, then we require different amount of heat supplied. We require different amount of heat. उसको अभी उल्टा कर दे, taking the same mass, right, and just see that the rise in temperature is same. इसमें भी 1 degree बढ़ा है, इसमें भी 1 degree बढ़ा है, and just measure the amount of heat. Actually the amount of heat cannot be measured directly. We have to use a formula for that. Equation of heat का जो formula है उससे हमको measure करना है. We cannot measure directly, but
the temperature of substance can be measured directly by using thermometer, but the amount of heat cannot be measured directly. We have to use the formula, right? So चलो आज देखते हैं कि what is the heat capacity. So heat capacity I will explain first. The heat capacity is the amount of heat absorbed or released, right, for unit mass of substance to rise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Again I repeat, it is the amount of heat absorbed or released for the unit mass of substance through 1 degree Celsius. And that is called as specific heat capacity. And this specific capacity is different for different substance, right? The highest specific capacity is for water, that is 4186, जो भी ऐसा यूनिट होगा दैट विल डिराइव द यूनिट, राइट. तो चलो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका, तो यू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस. ओके, so before this we will write some factors on which the amount of it depends, right? So amount of heat supplied or amount of heat absorbed or released by any substance is directly proportional to, okay, so let that delta Q is the amount of heat, supplied, absorbed or released, is directly proportional to mass of substance, then delta Q is also directly proportional, बराबर. जैसे कि 2 कप चाय बनानी है और 5 कप चाय बनानी, तो किसको ज़्यादा हीट लगेगी? डेफिनेटली 5 कप चाय बनानी तो ज़्यादा हीट लगेगी, 2 कप चाय बनानी तो कम हीट लगेगी. सो दैट इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सब्सटेंस. अभी मान लो टेम्परेचर 25 डिग्री बढ़ाना है, फिर 50 डिग्री बढ़ाना, जैसे हम पानी गर्म करते नहाने के लिए जो इमर्शन हीटर यूज़ करते, राइट, तो बार बार हम चेक करते हैं कि कितना पानी गर्म हुआ है, राइट. तो पहले 10 मिनट में, फिर 15 मिनट में, फिर 20 मिनट्स में, 25 मिनट में. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ हीट भी बढ़ती. एंड दैट अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगा. सो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सब्सटेंस एंड राइज इन टेम्परेचर. So to remove this proportionality sign, we have to take some constant in physics that always you remember. So delta Q is equal to capital S constant into mass into delta T. Capital T we will take delta T, rise in temperature. Okay. So here S is where capital S is specific heat capacity of substance, right. So let's write the formula for S. S can be written as delta Q divided by mass into delta T. Now from this we can easily derive the unit for specific heat capacity. So SI unit of capital S will be the SI unit of amount of heat supplied or released or absorbed or released, that will be measured, that is measured in joule, because name of scientist. So you have to write with a small letter if you are writing complete spelling. Then kilogram, and this is 0 Celsius or 0 Kelvin, sorry, only Kelvin, right. So we can write the SI unit of specific heat, that is joule per kg per degree Celsius or joule per kg per Kelvin.
Now let's write the proper definition of the specific heat capacity. इसका screenshot ले लो. So let's write the proper definition of specific heat capacity. Is defined as the amount of heat is defined as is the amount of heat per unit mass absorbed or given out by the substance to change its temperature by by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. This is what the specific heat capacity is, the amount of heat required per unit mass absorbed or given out by the substance to change its temperature by 1 degree Celsius or Kelvin. Right? For example, specific heat capacity for water. Okay, लेकिन how much amount of water? 1 kg of water. If you take 1 kg of water by 1 degree Celsius. Okay, यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट हम डिफाइन करने में फॉर वाटर के लिए यहाँ पे यूजुअली 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द वी आर टेकिंग दिस टेम्परेचर. ओके, हमको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं कि क्यों 14.5 और 15.5 क्यों लिया, इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. Okay, so 1 kg of water by 1 degree Celsius, right? Then that heat delta Q, that S is equal to 4186 joule per kg per Kelvin, or 4186 joule per kg per degree Celsius. Suppose if you take 1 gram of water, for 1 gram of water, and to rise the temperature by 1 degree Celsius, how much amount of heat to be supplied? The specific heat capacity for water is 4.186 joule per gram per Kelvin. Right. So CGS, this is the SI unit actually. CGS unit of specific heat. CGS unit of specific heat capacity is how much? That is erg per gram per Kelvin, or erg per gram per degree Celsius. राइट. तो अभी ये जो पानी का स्पेसिफिक हमने देखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग क्या होता है? राइट, दिस मीन्स दैट 4186 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब और गिवन आउट, एब्जॉर्ब होगा तो राइज इन टेम्परेचर, अगर रिलीज होगा तो फॉल इन टेम्परेचर. एब्जॉर्ब और रिलीज फॉर राइज और फॉल इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. तो जब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा. अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज तो क्या होगा? ठंडा होगा, तो फॉल इन टेम्परेचर.
This is what the meaning. This much amount of heat required, okay, for 1 kg of mass, for 1 kg of unit mass, 1 kg of unit mass. लेकिन यहाँ पे बहुत जरूरी है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना हीट दे रहे हो आप लोग, लेकिन मास कितना है? मास शुड बी 1 kg, और कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, राइट? सो राइज और फॉल, राइज बोले तो एब्जॉर्ब, फॉल बोले तो रिलीज. Okay, just take a screenshot. See student, specific heat capacity is the property of a substance, the characteristic of substance. Okay, specific heat capacity is the characteristic of substance, that is amount of heat required depends on the nature of material, right? So different specific capacity having different for different material, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, राइट, कॉपर है, वाटर है, पैराफिन है, मर्क्यूरी है, all these liquids substances having a different specific heat capacity. So let's write the heat equation. Heat equation can be defined as amount of heat released or absorbed, delta Q is equal to the mass of substance, unit mass be mass of substance, multiplied by the specific heat capacity into rise or fall in temperature, that is change in temperature. The temperature can be rise or can be fall. Okay, so delta Q is equal to M into S into delta T. This is what you have to remember. This is very important concept. Okay, now they have given the specific capacity for gold. So 134 for gold, 134 joule per kg per degree Celsius. What does this means? This indicate that for gold, this indicate that इसका मीनिंग लिखना है. What does this means? Okay, this indicate that 134 joule of heat absorb or release for 1 kg of gold, to rise or fall of temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. This is what the meaning of this. कोई भी सब्सटेंस का अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है तो उसका मतलब क्या होता है कि दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड. मर्क्यूरी इज वेरी लेस, कॉपर वेरी लेस. जो जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इसका मतलब वो ज़्यादा जल्दी गर्म होगा, राइट? सपोज अभी आपने मम्मी जो है वो जब खाना बनाती है, राइट, तो यूजुअली शी इज़ यूजिंग अ वेसल विच हैज़ अ कॉपर बेस. वाई शी इज़ यूजिंग कॉपर बेस वेसल? वाई नॉट आयरन वेसल? वाई नॉट एल्यूमिनियम वेसल? वाई नॉट स्टील वेसल? Because the material which required the less amount of fuel, less amount of heat, right, that material to use to make the substance hot or to cook the food, right? That's why nowadays the copper based जो है, copper based utensil, they are good conductor of heat because they absorb the large amount of heat to rise the same less amount of heat to rise the same amount of rise in temperature. कम से कम heat लगती है for rising temperature. Understand? So that's why the copper based utensils are used by the housewife. Okay. Then the एक numerical दिया है. Let's see that numerical. 134 joule of heat is supplied. 134 joule of heat
is supplied to a block of gold mass, to a block of gold mass 100 gram, what will be the rise in temperature? What will be rise in temperature? They are given in the bracket specific heat capacity for gold का aurum, AU is AU, the Latin name इसका क्या है symbol AU, aurum. So that aurum specific capacity is given, that is 134 joule per kg per degree Celsius. Okay, so we know the formula, capital Q is equal to mass of gold into specific heat capacity of gold मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा. ओके, तो यहाँ पे मास दिया है, मास कितना 100 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम गोल्ड, मास ऑफ गोल्ड, इनटू द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गोल्ड विच इज इक्वल टू 134 joule of heat is supplied to mass of gold is 0.1 into 134. So this will get cancelled. Okay, so this can be written as 1 upon 1 by 10. 0.1 मतलब 0.1 kg ना मास, यहाँ पे जो 100 ग्राम दिया है, राइट. सो दैट विल बी द 10 डिग्री सेल्सियस. So temperature rise will be 10 degree Celsius. Now the next concept is what is molar specific heat capacity, very important. इसका screenshot ले लो. Now the next is molar specific heat capacity. Okay, now we know the formula for specific capacity, S is equal to, right, what was that formula? Delta Q is the amount of heat supplied divided by mass into change in temperature delta T. So that temperature may be fall or rise. Now instead of mass in kilogram or gram, unit mass, you have to take the amount of substance in moles. Okay, when amount of substance taken in moles, right? So we can define the molar specific capacity. Okay, for this we define molar specific heat capacity. जस्ट रिप्लेस द वर्ड विथ मास, इसको मास को रिप्लेस करना है. इसके जगह पे क्या लेना है, यू हैव टू टेक मोल, राइट. सो सी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय कैपिटल सी, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब फॉर 1 mole ऑफ सब्सटेंस बाय 1 degree Celsius. So simple. So delta Q by mu multiplied by delta T, where mu is mole of substance, or amount of substance in mole, right. Delta T change in temperature, it may be rise or fall, change in temperature, and delta Q is the heat absorb or release. Okay, now let's define the molar specific heat capacity. Definition of molar specific heat capacity. That is capital C.
is the amount of heat required, तो properly लिखते, the molar specific capacity of substance is the amount of heat, is the amount of heat per mole. See, this is very important, per mole. Underline this, okay, per mole absorb or given out, absorb or given out, absorb or given out, right, for the substance given out by the substance to change its temperature given out by the substance to change its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Change its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. See student, in physics ना you have to write a proper definition. एक correct definition चाहिए, इसमें grammatical भी wrong नहीं होना चाहिए, इसलिए we don't want to take any risk, right? So we have to write as it is given in the text. Now what is the SI unit and CGS unit? SI unit of molar specific heat, right? So that unit will be joule per mole पर डिग्री सेल्सियस. देखो मोल का जो ना MOL लिखने का, MOLE नहीं लिखना है, राइट? ये यूनिट है, MOL इज द यूनिट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर्ड इन मोल, MOLE, वो MOLE इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ओके. सो और इट कैन बी रिटन एज जूल पर मोल पर केल्विन. देन CGS unit of molar specific heat capacity, CGS unit of C can be written as erg per mole per degree Celsius, okay, or this can be written as erg per mole per Kelvin. So these units are very, very important. This molar specific heat also depends on the nature of substance, like a specific heat capacity and its temperature, okay. So molar specific heat capacity also depends on nature of substance as well as nature of substance, okay, and weakly on temperature, and weakly, very weak, not very strong, right? Weakly on change in temperature, weakly on temperature, weakly on its temperature of substance. So these are the few points about molar specific heat capacity. अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, टेक्सचुअल क्वेश्चन होगा. वाटर इज यूज एज अ कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स. देखो आप जब 4 व्हीलर पे ड्राइव कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, तो ड्राइवर क्या करता है, कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो जो बोनेट है वो खोलता है और उसके अंदर एक स्टोरेज रहता है, राइट, रेडिएटर के पास. वहाँ पे एक कूलिंग टैंक होता है, तो कूलिंग टैंक में वो पानी डालता है, या ट्रैक्टर वाला भी पानी डालता है, राइट. तो व्हाट इज द रोल ऑफ दैट कूलेंट? वो क्या करता है, जब भी इंजन गर्म हो जाता है, व्हेन द इंजन बिकम हॉट, टू मेक इट कूल वी हैव टू यूज अ कूलेंट. एंड वहाँ पे जो कूलेंट होता है दैट इज अ वाटर इज यूज एज अ कूलेंट. व्हाई? बिकॉज वाटर absorb large amount of heat and release large amount of heat, understand, per degree Celsius. like 1 degree Celsius टेम्परेचर को उतारने के लिए it absorb the large amount of heat and large amount of heat can be released. if you are using other liquid, right, जैसे दूसरा कोई भी लिया, जैसे इथेनॉल लिया, पैराफिन लिया, तो इंजन जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी नहीं होगा वो,
जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, वापस प्रॉब्लम आएगा। हमको वो नहीं चाहिए। हमको क्या है, हमारा जो गाड़ी का इंजन है वी हैव टू कीप इट कूल फॉर लॉन्ग टाइम। अगर लॉन्ग टाइम अगर कूल रखना है तो इंजन जो भी गर्म हुआ है उसके आजू बाजू जो भी कूलेंट है वो कूलेंट, दैट कूलेंट विल एब्जॉर्ब द हीट राइट फ्रॉम द इंजन। जो इंजन हॉट है उससे वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ट्राई टू कीप द इंजन कूल एज लॉन्ग एज, सो दैट वी कैन drive the car for long distances. Understand? Okay. Then the next question है, give reason water is preferred as a heater in hot water bag than other liquids. जो अभी some people are suffering from back pain, right, body pain या knee pain, जो भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, right, तो they are using the hot water bag. तो hot water bag यूज करते हैं, right. Why we are using hot water only? Why not other liquid? क्योंकि water only can absorb water, that hot water absorb the heat from our body, right? वो अपने बॉडी से क्या करता है, बॉडी को हीट देता है for long time, so that it can get a relief from the pain, right? And this hot water bag remains hot for long time because the specific capacity of water SW is almost 4200 joule per kg per degree Celsius. Understand? This is what this much amount of heat get absorbed of 1 kg of water by 1 degree Celsius. Absorb or release. And because of this reason only, it has many applications as the water has the highest specific heat capacity. Okay, बहुत सारे applications उसके. We can find that application on the net also, right? तो आप जरा ढूंढो और देखो जरा, right? Why do generally two specific heat of gas? अभी ये हुआ specific capacity for water एक ही होता है 4200 joule, okay? But if you take a gases to so the same gas, right? The gas will have the two different specific capacity. Why? Because the specific capacity can change as per the pressure change or the volume change, right? So at constant volume and at constant pressure, the gases will have the different different specific capacity. Just take a screenshot of this. Now we have discussed about the specific heat capacity for solid and liquid, but the gases having two specific capacity. Why? Because the gases are very sensitive for the small change in temperature. अगर gases में थोड़ा भी temperature change हो गया 1 degree Celsius 2 degree Celsius, right? So there is a possibility of change in pressure and volume also, right? And that's why the gases having two specific capacity. Gases having two specific heat capacity, that is specific heat capacity at constant pressure and at constant volume and at constant volume. Okay, चलो अभी देखते हैं at constant pressure. At constant pressure. When the gas is heated at constant pressure, when gas is heated, right, 1 gram or 1 kg of gas, when gas is heated at constant pressure, then at constant pressure, so there is change in volume, as well as rise in temperature, right? Suppose if you have taken some container
This is a container, and here is the piston. This is the piston. By keeping the pressure constant, right? So the volume will change, and there is expansion of gas. Okay, expansion of gas. So as the gas expand, so there the work is done, right? So part of heat supplied is used to increase volume plus to increase temperature. That is, work is done against pressure to increase volume okay, and at constant volume that is SV, the heat supplied to gas enclosed only to increase in temperature, but not increase in volume. So specific heat capacity at constant pressure is always greater than specific heat capacity at constant volume. This is what the relation. Okay, this is what the relation. Specific capacity of a gas at constant pressure is always greater than specific capacity of a gas at constant volume, and only the gases having the two different specific capacity. Why not solid and liquid? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में अगर मान लो आप थोड़ा भी हीट लगाया तो टेम्परेचर में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और इतना उसमें वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज नहीं होता है. देयर इज नो प्रॉपर चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर. बट फॉर गैसेस, if there is a small change in temperature, there is a large change in pressure and volume, and that's why the gases having two specific heat capacity. Okay, is that clear? Now the next is the principal specificity of a gas at constant pressure and at constant volume. So give the title, principal specific heat capacity at constant pressure and volume. At constant pressure and at constant volume. The definition is same as that of the how we define the definition for specific heat of substance, right? So here the principal specific heat of a gas at constant volume is defined as the quantity of heat absorbed or released for rise or fall of temperature of unit mass of a gas through 1 degree Kelvin or 1 degree Celsius, right, when this volume is constant. So let's write first the principal specific heat of gas at constant volume, that is denoted by S suffix V. Okay, so it is defined as amount of heat release or absorb, amount of heat absorb
or release of unit mass of a gas of unit mass of a gas for unit rise or fall of temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius when volume of gas kept constant. When volume of gas kept constant. This is what the definition. So now the principal specificity of a gas at constant pressure. तो क्या चेंज करना है यहाँ पे? When a pressure of a gas is kept constant, बस इतना ही याद रखना है. It is defined as the amount of heat absorbed or release of unit mass of a gas for rise or fall of temperature by 1 Kelvin or 1 Celsius when the pressure of a gas kept constant. That's all. And for constant pressure, it is represented by, for constant pressure, it is represented by S suffix P. Okay, so S suffix P is greater than S suffix V. तो मैंने रीजन भी बताया क्यों. Why we require large amount of heat to increase the temperature by 1 degree Celsius 1 Kelvin when the pressure of a gas is kept constant. क्योंकि वहाँ पे change in volume आता है. The part of heat supplied to the gas is used to expand is used to work done for expansion of gas plus जो rise in temperature to increase the internal energy, जो उसको internal energy gases की वो भी बढ़ाने के लिए as well as work done जो होता है वर्क डन करने के लिए भी उसको हीट लगती है. एंड दैट्स वाई एज कम्पेयर टू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर of a gas. Understood? So take a screenshot. Now, after principal specific heat of a gas at constant volume and pressure, the next terminology is molar specific heat capacity. Molar specific heat of a gas at constant volume and at constant pressure. Same definition which we have earlier defined for molar specific heat of a substance, right? तो यहाँ पे substance क्या कौन सा लेना है? Not solid, not liquid, but gas. And if you are taking a gas as a substance, right, to measure the molar specific heat of gas, then you have to take at constant volume and constant pressure. तो पहले define करते how to define molar specific heat of a gas at constant volume, right? Very simple. It's defined as the quantity of heat absorbed or released for rise or fall of temperature of 1 mole of a gas. दिस इज द की वर्ड हियर. अगर आपने ये डेफिनेशन में मोल वर्ड नहीं डाला, यहाँ पे यूनिट मास डाल दिया गलती से, तो आपका डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा. सो दिस इज द की वर्ड. ओके, एब्जॉर्ब और रिलीज आल्सो की वर्ड. थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट्स वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट. ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर ये वर्ड नहीं है यहाँ पे तो आपका डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा. गॉट इट? नाउ द सेम वे हाउ टू डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, heat of a gas at constant pressure, right, is the amount of heat absorbed or released for rise or fall of temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin or 1 degree Celsius when its pressure is kept constant. तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज करना है आपको? सिर्फ प्रेशर वर्ड यूज करना है. 1 mole विद एज इट इज. बाकी का जो वर्डिंग है सेम टू सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे when its pressure is kept constant. That's all. Okay, now let's write the relation between principal specific heat and molar specific heat at constant volume and at constant pressure.
relation will be like this. Principal molar specific heat represented by C suffix V, which is equal to, right, capital M is the molecular weight multiplied by the principal specific heat at constant volume. This is what the formula. Okay, then at constant pressure, this is at constant volume. Capital M is molecular weight of gas. Weight of a gas. You have studied molecular weight in chemistry, so you can use that formula. At constant pressure, Cp, C suffix P is equal to capital M molecular weight into principal specific heat at constant pressure, Sp. So these are the formulas are used. बहुत simple है. Okay. Now their next concept is heat capacity. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Next concept is very important, heat capacity or thermal capacity of inner body, of a body, right? मान लो I have two container. Okay, in one container if I take 1 kg mass of water and here the 0.5 kg mass of water, right, और दोनों का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री से बढ़ाना है. सो आई एम सप्लाइंग अमाउंट ऑफ हीट. Here also I have to raise the temperature. Okay, to increase the temperature by 1 degree Celsius. Here also to increase the temperature by 1 degree Celsius. So delta T is equal to 1 degree Celsius. Here also delta T is equal to 1 degree Celsius. But here I have taken the amount of substance is different quantity, right? So what will happen? यहाँ पे भी 1 डिग्री बढ़ाना है, यहाँ पे भी 1 डिग्री बढ़ाना है. So the water which has more mass, that will require large amount of heat. Suppose this is A, this is B. Okay, so amount of heat supplied to the beaker A will be more as compared to amount of heat supplied to the beaker B. Why? Because here the mass is less, here mass is more. Now let's define the heat capacity or thermal capacity, the amount of heat required to raise the temperature of a substance, temperature of a body by 1 degree Celsius for given mass of substance. जो भी मास दिया है, नॉट कि यहाँ पे कोई यूनिट मास नहीं है, यहाँ पे कोई 1 kg नहीं है, 1 ग्राम नहीं है, यहाँ पे जो भी मास दिया हुआ है स्मॉल अमाउंट में होता तो उसका अगर 1 डिग्री से बढ़ाने तो उसको कम हीट लगेगी. अंडरस्टैंड? मान लो कि मुझे 1 कप चाय बनानी है और 2 कप चाय बनानी, तो 1 कप चाय बनानी जल्दी बन जाती, राइट, कम हीट लगा तो तुरंत वो बॉयल हो जाता है. लेकिन 2 कप चाय अगर बनानी तो मास बढ़ गया, तो मास बढ़ गया मतलब क्या हुआ? इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे सेम सब्सटेंस दिया है एंड डिफरेंट मासेस. ओके, सो फॉर सेम सब्सटेंस but different masses require different amount of heat to rise or fall of temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. This is what statement. So heat capacity और thermal capacity, उसको दूसरा नाम क्या है? Thermal capacity. Heat capacity और thermal capacity is defined as
defined as amount of heat absorbed or release, amount of heat absorbed or release for given mass of substance, this is very important word. Okay, given mass of substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin, which is denoted by, let कुछ symbol use कर लेते thermal capacity or heat capacity is H. H is thermal capacity, okay, which is equal to mass of substance into specific heat capacity. Okay, so this is M into S. This is what the formula H. So heat capacity or thermal capacity will be this much. So heat capacity, we can also taken as capital Q, M into S, mass into specific heat capacity. So specific heat capacity S is equal to the heat capacity upon क्या आएगा, upon mass. Okay, now what could the unit of SI unit of heat capacity? SI unit of heat capacity is equal to unit of mass कितना आएगा, किलोग्राम, इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या आएगा, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन. तो किलोग्राम कट हो जाएगा. सो इट इज जूल पर डिग्री सेल्सियस. दैट इज व्हाट एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, जूल पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन और जूल पर केल्विन, और दिस कैन बी रिटन एज जूल पर केल्विन. ओके, तो वेरी सिंपल, ये फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे. तो मास का किलोग्राम, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये स्पेसिफिक कैपेसिटी का यूनिट है. वो सब्स्टिट्यूट किया तो केजी कट हो जाएगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. Hello student, let's solve the numerical based on the specific capacity and thermal capacity. तो पहला न्यूमेरिकल देते हैं, which is solved in the textbook, page number 127, example number 7.13. You can refer the text. If the temperature of a 4 kg mass, the mass of substance given 4 kg mass of material of specific heat capacity 300 joule per kilogram per Celsius rises from 20 degree Celsius to 30 degree Celsius. Find the amount of heat absorbed or amount of required. So the heat, let us write the given quantity first. Given are, जो दिया है वो पहले लिख लेने का, राइट. यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस दिया है m इज इक्वल टू 4 kg. देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस दिया है, दैट इज s विच इज इक्वल टू 300 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस. एंड द टेम्परेचर दिया है, इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, एंड हेंस वी कैन फाइंड द राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T कैन बी टेकन एज 30 minus 20 which is equal to 10 degree Celsius. Okay, then to find amount of heat required to rise this temperature. So Q is question mark. Then formula for this capital Q, the amount of heat absorbed, okay, or supplied, that is mass of substance into specific heat into delta T, change in temperature. So substitute करो, मास दिया है 4, स्पेसिफिक हीट दिया है 300 जूल
per kilogram per degree Celsius into change in temperature 10 degree Celsius. So this will be 4 3s are 12,000 joule. This is what the answer. So simple. 2 या 1 मार्क के लिए CT में it can ask for 1 mark. Okay, और रेगुलर इसमें 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा. Now let's solve the next numerical. Find the thermal capacity. Okay, of for a copper block of mass. तो यहाँ पे गिवन लिख लेते पहले. Given mass of a block, copper block small m, which is equal to 0.2 kg or 200 gram. But here we need in SI unit only. Then specific heat capacity S copper, which is equal to 290 joule per kg per degree Celsius. बहुत काम है कॉपर का, क्योंकि इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ यूटेंसिल फॉर कुकिंग पर्पस. ओके, कॉपर बेस्ड यूटेंसिल आर यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस. देन थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी. थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ कॉपर multiplied by specific heat of capacity of water, copper, capacity of copper. So just substitute it. 0.2 multiplied by specific capacity 290. So this will be 58 joule per degree Celsius. This much it is thermal capacity or heat capacity, 58 joule per degree Celsius. Take a screenshot. Next simple numerical which is unsolved from the textbook, page number 140, question number 3 का second है. Which will require more energy? Heating of 2 kg block of lead by 30 Kelvin. So change in temperature here is 30, right? The material is lead. Or heating 4 kg block of copper by 5 Kelvin, right? तो इसका टेम्परेचर सिर्फ 5 केल्विन से बढ़ा है और इसका टेम्परेचर 30 केल्विन से बढ़ा है, right? So definitely both these substances are different because their specific heat capacity is different, right? अभी यहाँ पे देखो लेड का स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है 128, मतलब जल्दी गर्म होगा, एज कम्पेयर टू कॉपर 387 जूल पर केजी पर केल्विन. ओके, तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि विच विल रिक्वायर मोर एनर्जी, मतलब क्यों निकालना है. सो लेट्स फाइंड. पहले यहाँ पे गिवन लिखेंगे. गिवन आर द मास ऑफ अ लेड m lead is equal to 2 kg. Then delta T, change in temperature for lead, is 30 Kelvin. Then mass of copper MCU, which is equal to 4 kg, whereas rise in temperature for copper which 5 Kelvin, and the specific heat are given here, right? So formula amount of heat required for lead, Q lead is equal to mass of lead, mass of substance, multiplied by specific heat capacity of substance, that is S lead, multiplied by change in temperature for lead. So which can be written as mass कितना है 2 kg into specific heat कितना है 128 multiplied by 30. तो यहाँ पे क्या आएगा 60 मल्टीप्लाई 128 विच इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट लेते 6 8 जा 48 कैरी 4 6 2 जा 12 12 प्लस 4 6 कैरी 1 6 1 6 768 एंड ये जीरो आ जाएगा. सो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, राइट, to rise the temperature of lead by 30 degree Celsius.
Similarly, we have to find the amount of heat required for copper. So Q copper is equal to mass of copper into specific heat of copper into rise in temperature for copper. Just substitute value, mass कितना दिया है 4 into specific heat कितना है 387 multiplied by temperature rise 5, 4 5 are 20 into 387. अभी 387 का डबल करते कितना आता है QCU is equal to 2 7 जा 14 carry 1, 2 8 जा 16, 16 plus 1 17, 2 3 जा 6, 2 8 जा कैरी 1 रहे 7 6 7 7 और 0 जूल. ओके, तो ये ज़्यादा है 7740 और 7680, राइट. So if you compare this, both the heat, Q copper is greater than Q lead. So the copper block will require more heat for rise in 5 Kelvin temperature. Let's look at the next numerical. Textbook unsolved page number 141, question number 3 का 11 न्यूमेरिकल है, 11 नंबर का न्यूमेरिकल है. What is the specific heat of a metal if 50 calorie of heat? Heat can be measured in calorie also. Okay, 1 calorie is equal to 4.2 joule, जो हमने पहले लेक्चर में देखा है. Is needed to raise 6 kg of the metal from 20 degree Celsius to 62 degree Celsius. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते. गिवन वैल्यूज आर amount of heat Q is equal to 50 calorie. यहाँ पे जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. Then mass of metal M is equal to 6 kg and rise in temperature delta T is equal to 62 minus final temperature minus initial temperature, which is 42 degree Celsius. Change in temperature is final temperature minus initial temperature. Okay, what we have to find? Specific heat of metal. So amount of heat supplied Q is equal to mass into specific heat into rise in temperature. So S can be written as S as the subject, capital Q upon mass into change in temperature. So just substitute this 50 calorie, 50 divided by mass कितना है 6 into change in temperature 42. So 50 upon इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25 252. ओके, इसको लॉग टेबल से सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर इन डेसिमल. डेसिमल में मिलेगा आपको. इट इज 0.198 कैलोरी पर केजी per degree Celsius. This is the specific heat capacity of that metal. Okay, so just take a screenshot. Now the next concept, that is the calorimetry, that is the measurement of heat. अभी तक हमने देखा कि specific heat capacity, molar specific heat, principal specific heat, specific heat of a gas at constant pressure, constant volume. We also distinguish between the temperature and heat. Like temperature can be measured by using thermometer, but how to measure specific heat capacity of any substance? जैसे पानी का specific heat capacity. Okay, the specific heat capacity of water is 4186 joule per kg per degree Celsius. Okay, और कोई भी मेटल का है, कॉपर मेटल लो, आयरन बॉल लो, जो भी है, उस कोई भी मेटल का, कोई भी सब्सटेंस का अगर स्पेसिफिक हीट मेजर करना है, देन वी हैव टू यूज apparatus and that apparatus is called as calorimeter. उसको हम क्या बोलते हैं? Calorimeter. And to measure the specific heat or amount of heat supplied or absorbed or evolved, that technique, experimental technique to measure the quantitative heat
heat measured, that branch is called as the calorimetry. Okay, so let us define the term calorimetry. It is an experimental technique, or technique for the quantitative measurement, not qualitative. हाई और लो नहीं, कितना ज़्यादा कितना नहीं, हमको क्वांटिटी चाहिए, जूल में चाहिए, परफेक्ट वैल्यू चाहिए और उसको मेजर करना है. तो जो हम टेक्निक यूज करेंगे, दैट टेक्निक इज नोन एज कैलोरीमेट्री. कैलोरी इसको स्प्लिट करेंगे बाद में. फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज, कितना हीट दिया और कितना लिया, हीट एक्सचेंज. And apparatus used for measurement of calorie, that is heat exchange. Measurement of calorie is called calorimeter. Okay, because we measure the amount of heat in calorie. And this is possible. So when two bodies are in thermal contact, okay, so when hot body are in thermal contact with, लेकिन गुड थर्मल कॉन्टैक्ट, अच्छा, आर इन गुड थर्मल कॉन्टैक्ट with cold body, then there will be exchange of heat from hot body to cold body, okay, without loss of energy with surrounding. तो आपको ऐसा सेटअप बनाना है कि उसमें कोई भी एनर्जी जो है वो हीट लॉस होनी नहीं चाहिए, राइट. सो यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ सेटअप टू दिस, राइट. So and this work on the principle of conservation of energy, energy cannot be created nor destroyed, it just transfer from one substance to another substance and the total energy of a system always remains constant, right. Conservation of energy, ये लॉ हम काफ़ी सालों से पढ़ के आ रहे हैं, 9-10 में भी था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो हियर व्हाट वी कैन राइट अ प्रिंसिपल, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी which is equal to heat gain by cold body. बहुत सिंपल है, राइट. फिर यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा, द मास ऑफ ms डेल्टा T, ओके, मास ऑफ हॉट बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी, राइट. हॉट बॉडी क्या करेगी, टेम्परेचर कम करेगी, सो देट इज द फॉल इन टेम्परेचर which is equal to, now when hot body come in contact with cold body, so the mass of heat, this is heat lost, so heat gain will be mass of cold body multiplied by specific heat capacity
of cold body multiplied by rise in temperature. यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देना है तो क्या होता है, जो ब्लैक स्मिथ होता है, जब ब्लैक स्मिथ कोई भी अगर आयन का कोई भी एपरेटस है, उसको जब उसको बनाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको गर्म करता है, हीट करता है, और बाद में उसको ठंडा करता है तो पानी में डालता है. अब बाद में देखो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. मतलब क्या हुआ कि दी हॉट मेटल रॉड ट्रांसफर द हीट टू द कोल्ड वाटर and the water become hot. Okay, that is what happened. So this is what the concept calorimetry, right, is a technique, experimental technique to measure the quantitative heat exchange. कितना हीट दिया, कितना लिया, कितना एब्जॉर्ब किया, कितना लॉस हुआ है, that can be measured by this technique. Okay, now what is the equilibrium temperature? When the two bodies are come in contact with each other and they attain the same temperature, right, so that is called as equilibrium temperature. और जो condition होगी that is called as thermally equilibrium, that is called as thermally equilibrium. For example, if you are taking ice, अगर ice लिया, ये बीकर है, यहाँ पे पानी भरा है, suppose water at 25 degrees Celsius and just pour the ice cubes at 0 degrees Celsius. So what will happen? This ice cube will melt in this. Okay, तो इसका जो टेम्परेचर कम हो जाएगा, पहले 25 डिग्री था तो हो सकता है 10 डिग्री पे आ जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द आइस एंड मास ऑफ द वाटर in which it is poured. Okay, and this there will be exchange of heat with ice as well as water till they attain the equilibrium temperature. Okay, and that is called as thermally equilibrium. वो जो condition होगा at when they achieve the constant temperature, so that will be the thermally equilibrium. Okay, now the next is, अभी इसका फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, राइट. सो कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ कैलोरीमीटर होता कैसे है, हाउ टू मेजर इट, उसका फॉर्मूला क्या है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Okay, now let us see what technique to be used for measurement of heat, that is the calorimetry, and the device used for to measure the quantitative heat, that device is known as calorimeter. Actually calorimeter जो है, this is made up of copper. Why? Because the copper has a low specific heat capacity, and the stirrer, what is the stirrer used, that is also made up of copper, and this copper vessel enclosed in a insulating wooden box. एक wooden box होता है, उसके अंदर वो रखा जाता है, and that wooden box and this calorimeter also insulated by some insulating material, so that there should not be any exchange of heat with the surrounding. कोई भी हीट है जो लॉस नहीं होनी चाहिए, राइट. एंड इट इज ऑल्सो कवर्ड विद द वुडन लीड. यहाँ पे लकड़ी का एक ढक्कन रहता है, वुडन लीड होता है, विच हैज द 2 holes. One hole is made for the thermometer and one hole is made for the stirrer. You will perform this activity in the experiment in the journal activity. Okay, when you go to lab you can perform this activity to find the specific heat capacity. Okay, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेटालिक बॉल लेते, कोई भी मेटल का बॉल लेते, एंड दैट मेटालिक बॉल ही हीटेड इन दी हॉट वाटर. एक कुछ सैंपल होता है, राइट. मान लो ये सैंपल ये है मेटल बॉल, एंड विच इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ हॉट वाटर, एंड दैट वाटर गेट बॉइल्ड टिल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉट एवर दी टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, दैट टेम्परेचर विल अटेंड बाय दिस मेटल बॉल. ओके, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसको डायरेक्ट आप फायर पे लगाओगे, बर्नर पे इसको रखोगे तो ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा. वी कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर. तो ये जो टेम्परेचर है, यहाँ पे भी एक थर्मामीटर लगेगा, राइट. तो पानी का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो बॉल का भी, मेटालिक बॉल का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा. ओके, एंड दिस मेटालिक बॉल, हॉट मेटालिक बॉल immerse immediately quickly in the normal temperature of water. जो भी नॉर्मल टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस, तो नॉर्मल टेम्परेचर में इसको इमीडिएटली क्विकली डालना है, ज़्यादा हीट लॉस नहीं होनी चाहिए, राइट. मतलब यू हैव टू कीप वेरी क्लोज. ये जो वेसल है ये बहुत पास में रखना है, ऐसे उठाने का
पेयर ऑफ टोंग से और फटाक से इसमें ये कैलोरीमीटर में उसको डाल देने का एंड जस्ट इमीडिएटली कवर इट, क्लोज इट, सो दैट which will avoid the which will prevent the loss of heat with the surrounding. Okay, and just stir it. Stir इसलिए है so that entire water will have the same temperature. Okay, and wait for take the readings after every minute वगैरह ऐसा कुछ रीडिंग ले लो and just note down that temperature. Okay, तो इसका जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हॉट बॉडी का और ये कोल्ड वाटर का कुछ टेम्परेचर लेते इसको T2 ले लेते, इसका T1, T2 और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो होगा दैट विल बी कैपिटल T. दैट्स ऑल. तो ये सब आपको कंसिडर करना है. तो देखते हैं क्या क्या देखना है. मास ऑफ हॉट बॉडी. ओके, लेट दैट मास इज m1. देन मास ऑफ कोल्ड वाटर और कोल्ड बॉडी, कोल्ड वाटर mw जो भी आएगा. ओके, देन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी विच इज T1 डिग्री सेल्सियस. मालूम नहीं कितना है, 100 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, डिपेंड्स. ओके, देन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, let that is T2 degree Celsius, and the temperature of mixture will be capital T. Okay, then specific heat capacity of metal, hot metal or metal, which will be that is S suffix m. Then specific heat capacity of cold water, that is SW. Then specific heat capacity of copper कैलोरीमीटर और वेसल स्टरर. कॉपर कैलोरीमीटर प्लस स्टरर भी कॉपर का ही लेना है, विच विल बी CSC S into Cu. Okay, then mass of कैलोरीमीटर प्लस स्टरर विच इज m3. इसको m2 ले लो, दिस इज m2 विच इज m3. ओके, तो ये सब लिखना है आपको. अभी क्या होगा, व्हेन द हॉट मेटालिक बॉल 100 डिग्री सेल्सियस इमर्स इन दिस वाटर विच इज कंटेन्ड इन द कैलोरीमीटर. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हॉट मेटालिक बॉल will lose the heat lost by hot metallic ball and the heat gain by the water as well as. लेकिन सिर्फ पानी नहीं एक्सेप्ट करेगा. यहाँ पे जो वेसल है, जो कॉपर वेसल है, कैलोरीमीटर है एंड स्टरर, दे बोथ विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम दिस हॉट मेटालिक बॉल. वो भी कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, तो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, द हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी equal to heat gain by cold body. Heat gain by water plus heat gain by calorimeter plus stirrer. Calorimeter plus stirrer दोनों उसको एब्जॉर्ब करेगा. राइट, तो पहले हम निकालेंगे हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, दैट इज द मास ऑफ मेटल मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इनटू यहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर होगा एंड दैट फॉल इन टेम्परेचर. So this can be written as
which is equal to heat gained by water, that is the mass of water, into specific heat of water into rise in temperature. Temperature of mixture कितना लिया है? T. Okay, so T minus temperature of water कितना लिया यहाँ पे? T1, sorry T2, T minus T2 plus mass of calorimeter copper, calorimeter plus सारे दोनों आ जाएगा वो total mass into specific heat of copper into rise in temperature T minus T3. T minus T2 ये भी सेम रहेगा, T minus T2 it will be same. इसका क्या लेंगे? मास ऑफ मेटल और मास ऑफ स्फीयर हॉट बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इंटू फॉल इन टेम्परेचर T1 माइनस T. हमको क्या फाइंड करना है? We have to find the specific heat capacity of metal. So let's make the formula Sm is equal to, अभी यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? T माइनस T टू कॉमन आएगा क्योंकि फाइनल टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही रहेगा, पानी का टेम्परेचर, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर और स्टरर का टेम्परेचर. वी हैव टेकन दी T2, राइट, एंड द कैपिटल T विल बी टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर फाइनल आफ्टर इक्विलिब्रियम. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज MW इंटू SW plus M into Cu into S into Cu whole bracket multiplied by T minus T2. और ये जो टर्म है मास ऑफ मेटल और टेम्परेचर डिफरेंस वो नीचे आ जाएगा. दिस कैन बी डिफाइंड लाइक दिस, M मेटल इंटू चेंज इन टेम्परेचर T1 minus T. So this is the formula for specific heat capacity of the given material, that is metallic sphere. Okay, yes, T1 minus T metal, बहुत सिंपल है. And next is specific heat capacity of मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर. तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? दैट विल बी, उसको हमने क्या लिया? SCU. ओके, कैलोरीमीटर मेड अप ऑफ कॉपर. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर, लेकिन वी हैव कंसीडर हियर कैलोरीमीटर एंड स्टरर मेड अप ऑफ द कॉपर. सो SCU इज इक्वल टू, दिस फॉर्मूला विल बी M1 SW. S1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा? T1 माइनस T, M मेटल इंटू S मेटल, ओके, इंटू T1 माइनस T अपॉन मास ऑफ क्या आएगा? मास ऑफ कैलोरी कॉपर, दैट इज कैलोरीमीटर, इंटू राइज इन टेम्परेचर T माइनस T2 माइनस मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डिवाइड बाय M इंटू Cu. This is what the formula. So take a screenshot. बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं.